नमस्कार, वेलकम टू श्रीकाय एकेडमी। सो लास्ट क्लास रे आमे एनसीईआरटी क्लास 7 रो हिस्ट्री बुक आवर पास्ट 2 रो फर्स्ट चैप्टर रो किछिटा पार्ट कवर करथिले। सो से चैप्टर टी थिला इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। तो हजार वर्ष भितर कोन कोन चेंजेस हेछि हमर हिस्ट्री रे से विषय रे आमे कवर करथिले लास्ट चैप्टर क्लास रे। तो तार रेस्ट ऑफ द चैप्टर आमे ए क्लास रे कवर करिबा। सो फर्स्ट आम लास्ट क्लास रे जानी कार्टोग्राफर क्या कहुए। कार्टोग्राफर मीन्स ए पर्सन हु मेक्स मैप्स। तो जो लोक मैप तैयारी करे से लोकटी को कार्टोग्राफर कहुए बोली आम पढ़ी। देन लास्ट क्लास में पढ़ी दुईटा मैप्र आम एनालिसिस करते मैप 1 एंड मैप 2। आम देखी कि दुईटा जाक मैप्रे किपरि चेंजेस होती 600 इयर्स गैप भितर दुईटा जाक मैप्रे ड्रास्टिक चेंजेस देखा मिली बोली आमे लास्ट क्लास रे पढ़ी। तो 600 इयर्स 600 वर्षर डिफरेन्स भितर मैप 1 एंड मैप 2 भितर जदि से इंडिया रो मैप और सेम प्लेस रो मैप बट सेटार रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट थिला बोली आमे लास्ट क्लास रे पढ़िले। देन लास्ट क्लास रे आमे ओल्ड टर्मिनोलॉजी न्यू टर्मिनोलॉजी रो किपरि डिफरेंस है विथ द टाइम सेटा भी आमे पढ़िले। किपरि हिंदुस्तान रो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कल्चर रे करा जायछि आमे सेटा मध्ये पढ़िथिले। लास्ट क्लास रे यहाँ भी पढ़ी कि हिस्टोरियंस आउ देयर सोर्सेस कौटू से हिस्टोरियंस माने सोर्सेस पाती जोटार हेल्प रे से हिस्ट्री लिखती से आम पढ़ी। तो सोर्स गुड़ा कौन थिला दे रिलाई ऑन कॉइन्स इनस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर द इनफॉरमेशन। सो यहाँ हूँ तार कॉज। But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period, and they slowly displaced other types of available information. Though this period, paper gradually became cheaper and more. तो जहाँ भी सब historically जिनस सब लिखा जाउतला सेटा सब पेपर रे लिखा जाउतला। लास्ट क्लास रे हम आर्चिव्स रो माने भी पढ़िथिले कि आर्चिव्स काहा कहा जाउतला। So archives होची कोन manuscripts were collected by the wealthy people, rulers and monasteries and temples, and they were placed in libraries and archives. So archive रो माने कोन चलन तो ये देखि नबा what is the meaning of archive। Archive माने होची a place where documents and manuscripts are stored. Today all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. So official records और transactions गुड़ा को जोटी सेव करके रखा जाए सेटा को archive बोली कहा जाए। सेटा हमें लास्ट क्लास रे पढ़थिले। Then next challenge देखिबा कौन लिखा है। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. So से लिखले कि आज सेतबेले समय रे एते डेवलपमेंट नथिला तो सेतबेले प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नथिला। सो लोक माने कोठी हिस्ट्री को सेव करिकि रखुतिले बाय हैंड से माने सेटा को लिखिकी सेव करके रखुतिले। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इट इज नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो से कहले कि जेतेबेले आमे हातरे जिनस गोटे लिखू ताले सेटा को छापीबाटा बहुत कष्टदायक होता बिकज अपन हातरे लिखिबा पई पड़े प्लस जदि अपन हैंडराइटिंग पढ़ी न पारंते ताले केतेबेले मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए। तो 10 से लिखिला manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another, and this is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. So से लिखले कि जेतु कि जो छापीबा गोटे मैन्युस्क्रिप्ट रा गोटे मैन्युस्क्रिप्ट को छापिया प्रोसेसटा कंटिन्यूअस रहला तो कोन हैला सेटा छापी धीरे धीरे तार इन्फॉर्मेशन सब मैनिपुलेट हैला चेंज होबा को लागिला। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आमे पाइले नहीं। So we are totally dependent upon the copies made by the later scribes. तो आमे टोटली हिस्ट्री जानिया पे कहा ऊपर वर्तमान डिपेंडेंट later scribes माने जो कॉपीज बनाती वर्तमान आमे ता ऊपर डिपेंडेंट है कि रहिले। As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. तो originally से कौन लिखिथिले सेटा जानिया पे different manuscripts ऊपर से माने dependent हेले। On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two
differ from each other, but historians did not know about the existence of the first person until the 1960s. It remained lost in large library collections. So कौन है ना जो हाथ लिखा अवस्था जो रहा बा बही भाव रहा लाइब्रेरी गुड़िक एत बड़ था से जगह खोजिकी पाइबा मुस्किल रहता. सो 1960s पर्यंत किछिटा लिखा जाइथिबा क्रॉनिकल मिली नथिला. सो नेक्स्ट टाइम देखिबा कौन लिखाई न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and the variety of developments that occurred over the period. So से लिखिला कि 1000 वर्ष जो रही 700 रु 1750 700 to 1750 एटा गोटे ह्यूज चैलेंज टू द हिस्टोरियंस. एटा हिस्टोरियंस मानक पई गोटे चैलेंज थिला कि से माने एते वर्षर हिस्ट्री को केमिति कलेक्ट करिवे because of the scale and the variety of developments that occurred over the period. A different movement in this period, new technologies made their appearance. So new technology एई टाइम में introduce करा गला. तो कौन थिला सेटा like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea and coffee. तो से कहला कि नुआ नुआ जिनस टेक्नोलोजी डेवलपमेंट से टाइम है जमीक स्पिनिंग व्हील आसला लुगा बुणवाई फायर आर्म्स आसला युद्ध करने इरिगेशन व्हील रो इंट्रोडक्शन करागला फूड रे नुआ पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी कॉफी इंट्रोड्यूस करागला. रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विथ द पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विथ देम एज वेल. सो ये सब चेंजेस किपर इंट्रोड्यूस करागला अन्य लोक मान द्वारा ये सब चेंजेस गुड़ाक इंट्रोड्यूस करागला. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes, and you will learn about some of these changes in chapter 5. तो 6 changes विषय हम chapter 5 में पढ़िबा बोली से लिखिछि. Then लिखिछि this was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunity. तो group of people कौन करते दूर दूरांत को जानते किछि गोटे नुआ opportunity पाइबा पाई. The subcontinent held immense wealth and prosperities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra. So से कहला कि ए टाइम रे गोटे ग्रुप ऑफ पीपल जो दूर दूरांत को जाउतले गोटे नुआ नुआ अपॉर्चुनिटी पालिया पे तांका भितर थिले राजपूत्स. राजपूत नाटी आसीछि कोथुरु राजापुत्र रु आसीछि राजपूत. Son of the king, Rajaputra by Rajputs. The son of the king or the son of the ruler. Between the 18th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो से माने जो माने राजपूत थिले से माने कौन कास्ट स्टाटस सेतबेले नउथिले क्षत्रिय कास्ट स्टाटस से माने सेतबेले नउथिले. तो एटा देखन चित्रटा व्हील रो चित्र देजी द पर्सियन व्हील रो एटा होचे पिक्चर यू कैन सी. देन नेक्स्ट द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. So बहुत सारा लोक सोल्जर्स कमांडर्स मानकर नेम मध्य से इंक्लूड करा जायतला से टर्म भितर जोटा कि राजपूत रे इंक्लूड होतला. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahmas and Castas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of the age to become politically important. So एमानक सहित अन्य को माने थिले मराठास थिले सिक्स जात एमस कैथास ए सब माने एमानक सहित एमाने मध्ये इंपोर्टेंट थिले एमाने मध्ये ट्राई करथुले अपॉर्चुनिटीज खोजवा पेंकी. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in other. So कौन है जिते लोक बढ़िले ग्रुप्स ऑफ पीपल बढ़िले तो से कौन है कि तांको खाइबा पई शस्य उत्पादन करा दरकार पड़ला तो से कौन कले फॉरेस्ट गुड़ा को क्लीन कर देकी सेटा को एग्रीकल्चरल फील्ड रे कन्वर्ट करले. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. So in habitat रो माने कौन हम चलन देखिबा
Habitat refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of its residents. So, habitat माने कौन refers to the environment of the region, वातावरण एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स सेटा होची तार हैबिटेट। तो से कौन लिखला चेंज इन हैबिटेट जेहेतु कि तांकर चलनी बा जो परिस्थिति से माने चलुथिले सेटारे परिवर्तन हो गला दैट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो जो माने जंगल रे रहउथिले तांकर हैबिटेट बा पारिपार्श्विक परिस्थिति रे परिवर्तन जोगु से मानको माइग्रेट करिया पे पड़ला माने अन्य जगह को जिबा पे पड़ला। अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकेम peasants. These new peasant groups gradually began to be influenced by the regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. So जो माने कौन कले ना लैंड टाइलिंग करिकी जहाँ भी ग्रो करबा पे ट्राई कले से माने अन्य मानन को इन्फ्लुएंस कले रीजनल मार्केट प्रीस्ट एक्सेट्रा द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हेले। देन नेक्स्ट देखिबा they become a part of the large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. So ସେମାନେ କ'ଣ କରେ local lords ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇକି ଟ୍ୟାକ୍ସ वगैरह ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। As a result, significant economic and social differences emerged amongst the peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with the agricultural activities during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis and subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. So, तापरे धीरे धीरे कौन है एग्रीकल्चरल ग्रोथ है से बिजनेस बढ़ला तापरे धीरे धीरे से टैक्स देवाई पड़ला तापरे जातिवादर प्रथा आरंभ है कास्ट सबकास्ट वगैरह स्टार्टिंग सेटू करागला। Ranks were not fixed permanently and are varied according to the power. So rank टा कहाँ पर dependent थिला power ऊपर dependent थिला। Influence and resources, power, influence और resources ये ऊपर dependent थिला। Power, influence and resources controlled by the members of the jati. The status of same jati could vary from area to area. तो area to area अनुसार से जाति मानकर status change होता रहा। Then next देखिए जातिस framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. से माने जाति जो जाति बनिला से जाति माने निज निजर रूल और रेगुलेशंस बनेले जहाँ अंडर रे अन्य लोक माने प्रतिपालित हेले। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas are the जाति पंचायत। तो से माने कौन कले जाति माने मिसिकी कौन कले असेंबली गोटे तैयारी कले असेंबली ऑफ एल्डर्स तो सेटा कौन कहा गला जाति पंचायत। तापरे से रूल्स और रेगुलेशंस गुड़ाक किए एनफोर्स कला ये जाति पंचायत एनफोर्स कला। But the jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of state. So ये जो जाति थिला जातिर लोक मैंने एकाठी थिले रूल्स और रेगुलेशन से माने बनइले सेटार गोटे असेंबली ऑफ एल्डर्स बनइले सेटा हेगला जाति पंचायत। एथुर आमे बुझिले से माने रूल्स और रेगुलेशंस निज विलेज रा मानिबा पई पडुथुला एंड से माने टुगेदर से माने स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट गोटे तयारी करथिले। देन नेक्स्ट देखिबा रीजन एंड एम्पायर। सो रीजन एंड एम्पायर आमर अपलोड करा जिबा आमर नेक्स्ट पार्ट रे। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीकाय एकेडमी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। श्रीकाय एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे। We provide classes for CBSE, ICSE, ODIA medium students class 1 to class 10 and we provide classes for all subjects math, science, English, social science, Hindi or Sanskrit, and we also provide special English and spoken English classes for the students those who want to become pro in English. And our location is New Age Colony, Pokariput, Bhubaneswar. श्रीकाय एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे। Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Shrikaya Academy for more educational videos. So, यार next part, हमारा next episode and next video रे upload करा जाएगा. Thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Shrikaya Academy.